पहुँचे जिधर गूंजे वही अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको MAC स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त इज्तिमा में खाने का और नमाज मगरिब का वक्फ़ा है। हमारे दोस्त जो हैं वो खाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमारे पास स्टूडियो में दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर तारिक साहब मौजूद हैं और डॉक्टर नुमान साहब मौजूद हैं, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे एक मजलिस अंसारुल्लाह के तहत जो एक एक्टिविटी होती है, रन, जो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर होती है, चैरिटी रन्स या चैरिटी वॉक्स, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और उसमें रन फॉर विंडसर एक ख़ास मुकाम रखती है, क्योंकि पिछले 4 सालों से ये रन हो रही है, और इस रन से जब ना सिर्फ जमात का तारुफ़ होता है बल्कि कम्युनिटी सर्विस भी होती है। तो सबसे पहले तो मैं अपने मौजूद मेहमानों को MAC स्टूडियो के अंदर खुशामदीद कहता हूँ, और इस रन के हवाले से हम बात करते हैं। तो तारिक साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा कि ये रन या चैरिटी वॉक्स जो हम करते हैं उसका मेन मकसद क्या है, और इससे हम क्या नतीजा हासिल करना चाहते हैं? ज़ाकमुल्लाह हसन, आपने मुझे मौका दिया। बुनियादी तौर पर ये जो रन्स हैं, इसका एक बड़ा मकसद ये है कि हम जो कम्युनिटी है उसके साथ हम मिलाप कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो दूसरी कम्युनिटीज़ के हैं वो आके हमारी जमात के साथ हमारे दोस्तों को मिलें, और एक दूसरे के साथ हमारी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन और वर्किंग रिलेशन पैदा हो जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं। और रन फॉर विंडसर, एज़ यू सेड, ये उसकी एक एग्ज़ाम्पल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चौथा रन था, और गुज़िश्ता 3 रन्स में हमने अब तक गुज़िश्ता 3 रन्स में हमने तकरीबन 47,000 रेज़ किए थे। $47,000। लेकिन ओनली दिस रन, चौथा जो हमारा रन था, इसमें हमने 30,000 से ज़्यादा, यानी एक रन में 30,000 और 47 आपने 3 रन में किए। और उसकी एक बड़ी वजह ये कि अब उसकी रिकॉग्नाइजेशन बनती जा रही है। शुरू में ये यकीनन छोटा था, लोग जानते नहीं थे, लेकिन अब लोग चूँकि जान रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है, तो उसकी वजह से जो है यकीनन ये भी एक वजह है। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं जिस तरह समझता हूँ कि इसमें हज़रत खलीफतुल मसीह की दुआएं साथ साथ शामिल हैं, क्योंकि हमेशा की तरह जब हमने ये रन शुरू किया तो सबसे पहले हमने हजूर की खिदमत में ख़त लिखा कि हजूर इस तरह हम ये रन करना चाह रहे हैं, और उसके बाद गाहे बगाहे हजूर को ख़त लिखते रहे एक एक मरहले पर। और जमात के बुज़ुर्गान से, अमीर साहब से, और जो बाज़ बुज़ुर्गान हैं टोरंटो में, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि इसके दुआ करें ख़ास तौर पर इस रन की कामयाबी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब चीज़ों के बाद जब आप कोशिश करते हैं किसी चीज़ के लिए तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद उसमें बरकत डालता है, और हमने ख़ुद वो देखा उस बरकत को अपनी आँखों से। So, Dr. Numan sir, going towards you, organizing a run is not an easy task. There's a lot of work needs to be done prior to holding such kind of an event. Establishing a team, assigning the duties, and all those things. So explain some of the challenges which you had, and how early you start planning for these runs, because now you are doing these runs in a continuous year. So once one run is finished, how early you start planning for the next, and what are the steps for those planning? Assalamu alaikum ji, jazakallah for having me today. And yeah, you're right, for every success we do, we need, as a Muslim, we need prayers, but also we need planning as well. And planning starts soon after the previous runs finishes. Like Jalsa, next event is going to happen. The previous event as finishes, the planning starts then and there. And it needs a huge amount of organizations, and by the grace of Almighty, because Jamaat Ahmadiyya, we have that teams available, we have volunteers available, and we have a vision available, we have a will available. But again, to get all those ready and work in harmony and synchronization is a big challenge.
Especially talking about this was my first role as a director for the Windsor run for Windsor 2024. So again, the planning was very important for that. So we organized into different teams. So we have a team for media, we have a team for IT, we have a team for outreaching the people, we have a team for fundraising, we have a team for press release, we have a team for a coordination with the hospital, we have a run day team, we have a logistic team. So all those teams, and we have a regular meeting, we have a planning with them, so that therefore we eventually by the grace of Almighty, we have a great success this year. So this year run was a great success in a different avenue. For this year only, we are going to give a check to the hospital for a $30,000, over $30,000, but we raised around over $40,000. But apart from that, raising the fund, the awareness we have reached to the masses of the Windsor, and the amount of the people we have engaged is, not because I was a director or we were as a part of Jamaat, the people who were present there. For example, I can mention one of the member of parliament, Arik, who's a very good friend of us. I was just standing beside him, and every time, the wide variety of the involvement of the different fraction of the people were there, he was saying, it's incredible, it's amazing. So, that's the constant bombardment of the word I heard him, because he was so astonished that how you manage to get every person of society presenting in this Windsor. For example, I can mention one of the person who was, because it's a timed run. So the timed run person who were managing that, so he was saying, I'm managing this run, these type of runs, the charity runs, for over a decade. I've never seen that such, a politician and politicians from all single parties of the Windsor are there. And then, for example, the communities, for example, we have members from Buddhists, we have from Ismaili, we have representatives from Chinese community, so from all religious denominations, social denomination, ethnic, so the representation was there. So, and this is the first run where our members were less than the representation from outside. For example, we have over 500 people, and over 300 people were from the outside members. And then this is also the run, because according to the instruction from the Sadr Majlis, he said, we should organize to have the fundraise mostly not from the members, because that also reflects on our chanda, because should not come from our pocket, or it should come from the outside, because you outreach, because our members are very generous anyway. So your success will be reflected if you if you are able to get the money from outside the pocket. So being a religious organization and getting money from the outside people for a community event, I think that's also an indication of its success. And by the grace of Almighty Allah, and by the guidance from the Sadr Majlis of the Windsor and the Sadr Majlis from the Ansarullah, so I think we had a great success this year, alhamdulillah. So Tariq साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं. वैसे तो रन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो हर एस्पेक्ट जो है एक ख़ास चैलेंज और एक ख़ास डिमांड के साथ होता है, लेकिन दो एस्पेक्ट जो हैं जिनको मैं देखता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और आपकी रन की कामयाबी की जिसे कहते हैं की होते हैं, एक आपकी फंड रेजिंग है और दूसरी उसकी पब्लिसिटी है, लोगों के अंदर अवेयरनेस. क्योंकि फंड रेजिंग ऑब्वियसली लोगों के दिल बड़े भी होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. तो पब्लिसिटी की तरफ हम डॉक्टर नुमान साहब की तरफ चले जाएंगे, लेकिन फ़ंड रेजिंग, क्योंकि इस वक्त मजलिस अंसारुल्लाह के तहत तकरीबन 5 रन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करनी है. इसी महीने जो हैं वो 2-3 रन्स हो रही हैं. रन फॉर हैमिल्टन हो रही है, रन फॉर लॉर्ड मिनिस्टर है, रन फॉर एडमिंटन है, रन फॉर विनीपैग है, आपकी रन फॉर विंडसर हुई है. और कोई ऐसा नुस्खा जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया हो, जो कि बाकी जो रन्स के ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो अगर सुन रहे हैं या बाद में देखते हैं तो वो उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमेशा फ़ंड रेजिंग और ख़ासकर इस मौके पे जब आप सितंबर या अक्टूबर में या लेट जून जुलाई में जाते हैं तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हमने तो फ़ंड ऑलरेडी एलोकेट कर दिए थे, अब हमारे पास नहीं है. लेकिन 30 से 40 हज़ार डॉलर जमा करना मिड ऑफ द ईयर मेहनत तलब काम है. उसके बारे में बड़ा अच्छा आपका सवाल है. और जिस तरह आपने कहा नुस्खा, हमारा तो एक ही नुस्खा है, दुआ.
वो तो है बुनियादी, लेकिन उसके साथ कोशिश, और कोशिश भी इस तरह जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने हमने एक एक मरले पर एक एक कम्युनिटी से अप्रोच किया, जाके टाइम लेकर उन्हें मिले या उन्हें बुलाया, और ये एक बड़ा टेंस काम है इस वजह से कि यहाँ के माहौल में आपके पास टाइम है, किसी दूसरे के पास टाइम नहीं। सो अपने आप को अवेलेबल करना उनके लिए और अपने आप को उनको बाज़ दफ़ा अवेलेबल करना अपने टाइम के मुताबिक। सो वो एक मरला था, काफ़ी चैलेंजेस थे इसमें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक चीज़ हुई वो ये थी कि चाइनीज़ कम्युनिटी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, वो पहली दफ़ा हुआ है कि चाइनीज़ कम्युनिटी ने खुद आके हमें ये ऑफ़र किया कि हमारा रन जून में होता है, तो हम चाह रहे हैं कि हम आपके साथ मर्ज कर लें। लेकिन उसके साथ उसमें थोड़ा सा हमें ये हुआ कि अब ये चाइनीज़ कम्युनिटी आ तो रहे हैं, लेकिन कुछ मशरूत रन में ना शामिल हों, कंडीशंस ना हों उनकी, क्योंकि बहरहाल ये रन हमारे रन फॉर विंडसर के अंडर होगा जी। तो उनसे पहले हर चीज़ की क्लैरिटी ली गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस पर एग्री भी किए, और उन्होंने फिर बाद में जो चेक भी दिया वो रन फॉर विंडसर के नाम का दिया, और बड़े खुश हुए उसमें वहाँ पर आके। बाकी चैलेंजेस तो हर चीज़ में होते हैं, लेकिन इसमें जो अच्छी बात इस दफ़ा के रन में ये थी कि हमारी कम्युनिटी बिल्कुल शामिल थी। हम सब बहैसियत जमात भी, बहैसियत मजलिस भी, हर नासिर इसमें शामिल था, खादिम भी शामिल थे, और लजना ने भी किसी हद तक हमारी पीछे रहकर बैक में हेल्प की। लेकिन जब फ़ंड रेजिंग का टाइम आया तो उसमें हमारी ये कोशिश थी कि मिनिमम कम से कम जमाती लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि रन का एक मकसद कम्युनिटी आउटरीच है। सो हम ये चाहते हैं कि बाकी कम्युनिटीज़ आके हमें देखें और हमारे साथ मर्ज करें और हमारे इस कॉज़ में हिस्सा बने। असल में शुरू में आपको बता दूं कि हम ये जो फ़ंड रेज़ कर रहे थे, ये हॉस्पिटल के लिए जो नया मेगा हॉस्पिटल बन रहा है उसके लिए रेज़ हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल से भी जब हम डिग्निटरी से मिले तो इनिशियली हमने उनसे ये प्रॉमिस किया था कि हम अगले इंशाल्लाह 10 सालों में $500,000 आपको रेज़ करके देंगे। लेकिन जब हमने ये देखा इस रन के बाद कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस जा रहा है, तो अगली मीटिंग जब उनसे हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, अब हमारी अगली नस्लें इस शहर के साथ वाबस्ता है। बिल्कुल। और जमात अहमदिया अल्हम्दुलिल्लाह फैल रही है इस सारी रीजन में, तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको लिमिट ना रखें 1 मिलियन की या $500,000 की। ये एक प्रोसेस है जो इंशाल्लाह चलता जाए, 10 साल चले, 20 साल, 30 साल, जब तक आपका हॉस्पिटल बनता है, और उसके बाद भी इंशाल्लाह ये प्रोग्राम सारा चलेगा। तो उसके लिए फ़ंड रेज़ करने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ये है कि जब आप अपनी कम्युनिटी में जाते हैं, सबसे पहले तो आप एक्सप्लोर करते हैं उन बिज़नेसेस को, उन लोगों को जिनके साथ आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हैं और जो साहिब हैसियत भी हैं और जो चाहते हैं कि वो आके कम्युनिटी की हेल्प भी करें। और अगेन आई सेड कि टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपको मिलना पड़ता है उनसे जाकर। वो बाज़ जगह बाज़ दफ़ा ये लगता था, बल्कि इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे एक नाम लिए बगैर मैं आपको बता दूंगा, हमारे एक स्पॉन्सर हैं जो गुज़िश्ता रन्स में हमें 10,000 तक स्पॉन्सर देते थे। इस साल उन्होंने कहा कि मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं है तो मैं शायद आपको स्पॉन्सर ना कर सकूं, कुछ भी ना दूं। तो उस पर थोड़ी सी हुई फ़िक्र, फिर दुआ भी की कि अल्लाह ताला खुद ही उसके दिल में डाले। तो फिर एक दोस्त थे हमारे जिनसे हमने रब्ता किया, हमने कहा आपका उनसे एक ताल्लुक़ है तो ज़रा उनसे पता करें। तो हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि 5,000 तक कर दूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो रन वाले दिन आए तो कहते मैं 10,000 का ही चेक दूँगा। तो वो अल्लाह ताला ने एक ख़ास फजल किया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग दुआओं पर भी चलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब आप सच्चे दिल से कोई काम करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी बहुत रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। So Dr. Numan sir, coming to the second part of this question is, for a successful run, fundraising is a one aspect, but the participation on the day of the run is another aspect, and that participation depends on the publicity and the hype created for the run. So what planning and strategies which you used to publicize this event among the different communities, as Dr. Tariq Sahab has mentioned about the Chinese community, they came themselves,
but what other strategies which you use to mobilize the community outside our own community to participate in the run? Jazakallah for the questions. I think that's a very valid question. I think bringing the people on that day is a bigger challenge than the fundraising itself, because on a weekday, how the people come, that we have find is very challenging. But I think that like everything, if you break down a bigger challenge into a smaller challenge, and then work out on it. So I will explain what I mean by that. For example, we say, okay, what's your aim? Our aim is to be 500 people on that very day, for example. So, for example, our members in Windsor Jamaat are over 700. So we think if our active members are 250, and if we request every member to bring only one person to be on that day, so that's one breakdown. So that that's a very easy thing. Why? But the matter of the fact that every person is not that vocal, people are shy, people don't talk to them. So for the first thing which when we as an organizer, so I was more emphasizing on that to outreach our own people and say that you have to target 10 people. From the day when I met them, or day our team are met, we have continuous meeting with them, and every time we meet them, we said you have to contact 10 people for this run. Because if you outreach 10 times, you can then at least minimum you can bring one person. So that was one of the we outdone. And then then we have a team for advertisement. And then because there's a social media, we were on Instagram, we were on every single social media on internet. We have a website, so that also creates an hype, and then we also have pamphlets and play cards, and people were standing outside the different places on different times to create the information about the run. Then also what we did that the different runs, because that was the start of the summer, different runs were happening in the vicinity in the vicinity anyway. So every single run which was happening there, so we made our presence by our stall, and we did talk to, and we distribute our leaflets, and we told them this run is going to be happening, so you have to be there. Then what we did is that we have because as I previously said, that we involve every single, when you break down, actually we have 20 teams, and 20 teams who are representing the different social fabric of the society. For example, so we said, okay, we were say, for example, Chinese community. We say, okay, we are all outreaching you. Can you bring, let's say, 10 people from your community, at minimum 10 people? Then there was religious denomination was one. Then business denomination was one. Then the different again within the businesses there were different categories. There were trucking. We have a lot of people who were involved in truck business. So we said, involve your contacts, involve your friends, involve your colleagues. So by breaking down into a smaller thing and increasing the categories of so I think that was the reason for success as well. So the more you outreach. So I think the more you rather than having a one team or saying this team is responsible for bringing the audience, we say no. So we have 20 teams, and 20 teams are responsible to outreach into their own communities, into your own colleagues, into your own friends, and bring them. And then also, as I said previously, our own members, which were around 500, we said no, you have to bring people on that very day, and I think that worked. That worked. And then, for example, we also contacted schools, universities, and colleges. So even for only in the University of Windsor, we put 100 posters. Every single bulletin in the University of Windsor, our name was there. So then there's the St. Clair College, so we were there. Every single school of the Catholic board and the public school and the private school, they were contacted as well. So so that was one of the reason I think we will manage to get. Jazakallah, both of you. The azan is being called, and there will be a waqfa for namaz al-maghrib and isha. Again, I'm very thankful for both of you. Because of the limited time, we have to cut short this interview, but there is a lot more we can discuss about the Run for Windsor, and any majlis or any region who wants to hold the Run for Windsor, Tariq Sahab and Dr. Numan Sahab is available. They can contact them, and they will be happily
be able to help them out to chalk out the planning for the run for their own city. Jazakumullah again for your presence. पहुँचे जिधर गूंजे वही अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा।